and welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Priti Chawla. I was actually going to film a nutrition therapy episode today, but I was driving my way back home from the gym and I just started thinking about something and I felt like this is what I'm going to talk about today. I felt like it's a sign from the universe. So I'm sure by today's title of the video, you must have guessed today we're talking about how to think positive. And I don't mean toxic positivity. I'm talking about inherently how to become a human being which has a more positive view of the world and of himself or herself. So here's a reminder to get your beverage of choice. I made hibiscus infused water. I made hibiscus tea. Usme maine chia seeds soak kare. I added some cucumber slices that I will eat once I finish the drink. Tastes very refreshing. I have the recipe of it on my Instagram. If you want, you can check that out. And you can recreate this drink and we can sit together, chat, and sip on the same drink. That is so cool. So, a little bit of backstory. I struggled with depression and anxiety in 2021. I was on antidepressants, I was on SOS anxiety pills. Um, things were quite bad back then. When I say that I was struggling with all of these things in 2021, doesn't mean that things went bad in 2021. चीजें बहुत पहले से खराब होने लग गई थी, धीरे धीरे करके ना पाइल अप हो जाता है and then something happens जो इतनी बड़ी चीज भी नहीं होती है but it pushes you to that side where जहाँ पे आप वो line cross कर देते हो where you realize that okay, no, now I'm actually depressed. So that's what happened with me. I was on these meds for good 6 to 8 months, but I was really struggling at that time क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी. मतलब 4 बज जाते थे, मेरे को नींद नहीं आती थी. I was up all night and I just couldn't control my overthinking. I just could not control my overthinking, my negative thinking. I was also having some not so good thoughts, if you know what I'm trying to say without saying it. I remember staying awake all night and thinking about not existing anymore. I was depressed to that point. I'm telling you all of this because I want to give you a clear idea about where I was and where I am now. So, one fine day, I decided that enough is enough and I don't want to take these meds anymore. Simply because one, they used to make me feel sluggish, I had no energy. Number two, I used to eat a lot. Like भूख जितनी होती थी उससे कई ज़्यादा खाती थी मैं, and I know that that was because of the meds. And despite taking the medications, I was still not feeling good. Through my medical experience, through my clinical experience, I had realized pills are not the answer. That pills can give you temporary relief. They can make you feel good in the short term, but not in the long term. Yeah, one fine day, I decided that enough is enough. I don't want to be on these medications anymore and I am going to change my life. That's what I told myself, that this is it, like I am going to change माई लाइफ, क्योंकि बहुत हो गया. धीरे धीरे करके मैंने अपनी मेडिसिन की डोजेज कम करी. मैंने एकदम से बंद नहीं करी. मीन वाइल आई स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इन माई लाइफ. आई स्टार्टेड ईटिंग बेटर एंड आई स्टार्टेड ईटिंग मोर इन बैलेंस. मैं पहले बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग करती थी, तो मैंने वो बंद कर दी. आई ऑल्सो स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग. नाउ आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर मोर देन 10 years नाउ. But when I was in that state of mind, when I was depressed and anxious, I don't know, I just could not exercise for some reason, और मैंने बंद कर दी थी exercise करना. And simply because मेरा मन नहीं करता था. I felt like I had no energy. I felt drained all the time. So when I decided to make this change, धीरे धीरे करके workout start करा. And I have always been an at-home workout kind of a person. I love working out at home, and that's what I've done for good 7-8 years. मैंने जिम 2 साल पहले ही ज्वाइन करा था. कभी घर पे रह के आई फील लाइक यू कैन गेट अ लिटिल स्लगिश, कि छोड़ो कौन उठे कल कर लेंगे टाइप्स. बट आई फील व्हेन यू गेट अप, गेट रेडी एंड ड्राइव, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो दैट ओके आई एम हियर टू एक्सरसाइज. सो आई फील दैट इज द चेंज दैट आई हैव फेल्ट. व्हाट अ ब्रेक. Once I got my diet in place, I got my workout in place, then I decided to change my brain, change how I think. And this is today's topic of discussion. When I was depressed, I was looking at the world through a negative lens. मुझे हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती थी. मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था. मुझे ना मैं अच्छी लगती थी, ना मुझे दुनिया अच्छी लगती थी, ना मुझे मेरा काम अच्छा लगता था. मेरा हर चीज़ को लेके एक बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन गया था कि मेरे साथ तो बुरा ही होगा, कि अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है तो अभी बुरा हो जाएगा.
या अपने आप को लेके मैं बहुत नेगेटिव थी। आई हैड बॉडी डिस्मॉर्फिया, आई नेवर लाइक्ड द वे आई लुक्ड। आई I was constantly finding flaws in myself, in my physical appearance, yes, but also in how I am as a person. And the truth of life is that अगर आप नेगेटिविटी ढूंढोगे आपको नेगेटिविटी मिलेगी, अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बट एज ह्यूमन बींग्स इट इज ईजियर फॉर अस टू थिंक नेगेटिव। पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है। व्हेन आई सैट डाउन विद माई सेल्फ एंड डिसाइडेड टू चेंज माई लाइफ, सबसे बड़ी रियलाइजेशन मुझे यही हुई थी कि मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। एंड क्योंकि मैं इतना नेगेटिव सोचती हूँ, मेरे आसपास मुझे नेगेटिव ही दिखता है और मेरी लाइफ में नेगेटिव ही होता है। व्हेन आई हैड दिस रियलाइजेशन, I made it a point to change the way I think. Easier said than done. तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब से मैं पॉजिटिव सोचूंगी चीजों को लेके। If only it was that easy. So when I decided to think more positive, I felt a lot of mental resistance. मतलब अगर मैं किसी चीज को लेके पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था why is my brain not agreeing with me? Why is my brain forcing me to think negative? यार लाइफ में पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, बट नेगेटिव परसेप्शन रख के कुछ नहीं होगा। नेगेटिव परसेप्शन रख के सिर्फ आप परेशान होगे और आपको हर जगह नेगेटिविटी दिखेगी। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होगा, बट आपका परसेप्शन ऑफ थिंग्स, आपका परसेप्शन अबाउट थिंग्स इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, विच मेक्स अ बिग डिफरेंस। आप कैसे किसी चीज को परसीव करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। किसकी लाइफ ईजी है यार? किसी की भी लाइफ ईजी नहीं है। Your life is not easy, my life is not easy, you have some struggles and I have some struggles. हम सब, we're all human beings and we have our own struggles. किसी की भी लाइफ इजी नहीं है, किसी की भी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होता है। सबकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी की भी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है, राइट? बट हम अपना परसेप्शन कैसा रखते हैं ऑफ थिंग्स, ऑफ सिचुएशंस, ऑफ सर्कमस्टांसेस, दैट चेंजेस एवरीथिंग। एंड मेरे लिए पॉजिटिव सोचना बहुत ही मुश्किल था, मतलब बहुत ही मुश्किल। एंड टिल दिस डेट इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट हैज gotten easier but it is still a little difficult for me to think positive. Now why is that? मेरे लिए पॉजिटिव सोचना इतना मुश्किल क्यों है? Because of my life experiences, because of what I have seen, what I have heard, and what I have absorbed growing up. Our childhood, our family life plays a big role in our adult life. How are we showing up as adults? And the reason why it was so difficult for me to think positive was because my mind, my brain was programmed to think negative. और वो तब होता है जब आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, जब आपकी ग्रोइंग अप, यू हैवंट सीन एनीथिंग पॉजिटिव। हमारा माइंड बहुत ही क्विक टू एब्जॉर्ब है, स्पेशली व्हेन वी आर किड्स, लाइक अ स्पंज। हम सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे आसपास जो भी होता है हम वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चे होते हैं यार, हमें कुछ नहीं पता होता है, हमें नहीं पता होता है कि ये सही चीज़ है टू एब्जॉर्ब या ये गलत चीज़ है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो फील करते हैं हम वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड एज अ किड आई एब्जॉर्ब दैट, आई एब्जॉर्ब सेल्फ क्रिटिसिज्म बिकॉज पीपल यूज टू क्रिटिसाइज मी, आई एब्जॉर्ब नेगेटिव थिंकिंग बिकॉज मेरे आसपास के लोग बहुत नेगेटिव सोचते थे। To dive deeper into this topic, we first need to understand a little bit of science कि हमारा brain कैसे work करता है. So first let's learn what brain plasticity is. Brain plasticity or neuroplasticity is your brain's ability to change and adapt throughout your life. Your brain forms new connections and neural pathways in response to your life experiences. Now, your brain is incredibly plastic during your childhood and adolescent years. जैसे हम physically grow करते हैं इस टाइम पे, हमारा brain भी बहुत grow करता है इस टाइम पे। मतलब सोच के देखो यार, it is so difficult to learn a new language now. बट एज अ किड हमें कुछ नहीं पता होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सब कुछ सीख लेते हैं हम। एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस भी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, ये भी लैंग्वेजेस हम सीख लेते हैं, राइट? लर्निंग इज वेरी इजी ड्यूरिंग दिस टाइम। आफ्टर द एज ऑफ 25 न्यूरोप्लास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, खत्म नहीं होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्रू आउट लाइफ रहती है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, दैट जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, वो जल्दी से अपना थॉट पैटर्न चेंज नहीं करते हैं। दे आर वेरी फर्म इनटू देयर बिलीव्स, जो वो सोचते हैं वो वही सोचते हैं, वो बदलना नहीं चाहते हैं और उनको लगता भी नहीं है कि उनको बदलना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन प्लास्टिसिटी विद टाइम आपकी कम होती जाती है। नाउ हाउ आई एम लिंकिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी टू नेगेटिव थिंकिंग इज दैट
बचपन में कभी कभी जब हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं या वी आर सराउंडेड बाय वेरी नेगेटिव इंडिविजुअल्स, हम वो चीज़ें बहुत कैच कर लेते हैं एंड एज वी एज हमें नहीं रियलाइज होता है इतना, बट एक इंस्टेंस या एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि ओ माय गॉड दिस इज माय रियलिटी। जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे इन माय कॉलेज इयर्स कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, बट when I came back from college, when certain life events happened in my life, that's when I realized that oh my god, मैं बहुत negative सोचती हूँ, and that was like a wake up call for me कि no, this is not right. So all of this said and done, how did I change my negative thinking to positive thinking? The biggest thing that helped me was affirmations. मैं पहले एफर्मेशंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और मुझे लगता था यार दिस इज वेरी स्टूपिड। मैं सच में ये सोचती थी यार कि लाइक पीपल आर सो स्टूपिड, दे प्रैक्टिस एफर्मेशंस, लाइक इससे क्या होता है। बट एक टाइम ऐसा हुआ व्हेन समवन वेरी क्लोज टू मी सेड समथिंग वेरी नेगेटिव टू मी, और वो मुझे बहुत दिन तक अफेक्ट करी बात। और तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि यार अगर कोई मुझे नेगेटिव बोल रहा है, मुझे वो कितना इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब वर्ड्स कितने पावरफुल हैं। एंड सबसे पावरफुल पता है क्या है? द वर्ड्स वी से टू आवर सेल्व्स। और हमारा कभी कभी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी पता है क्यों होता है? क्योंकि हमने आसपास ये देखा होता है, हमने आसपास देखा होता है दैट पीपल आर नॉट काइंड टू अस, पीपल आर नॉट नाइस टू अस, एंड दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। हमने यही देखा होता है दैट पीपल आर नॉट नाइस टू अस एंड वी आर ऑल्सो नॉट नाइस टू आवर सेल्व्स। अगर कोई मुझे नेगेटिव बोलता है मेरे बारे में, मुझे अपने बारे में नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। आई कैन चेंज दैट। Affirmations basically help in creating new thought patterns in our brain. With repetition and consistency, you are able to form new neural pathways in your brain. And this is exactly what I did. मैंने intentionally अपने thoughts को और अपने behaviors को change करना start कर दिया। सबसे पहला is obviously self awareness. आपको एक self awareness होनी जरूरी है that what kind of a person I am. तो स्टेप वन इज ऑलवेज सेल्फ अवेयरनेस। वंस यू आर अवेयर कि यार मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसे सोचती हूँ, उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो। सो आई फील मैं काफ़ी सेल्फ अवेयर हूँ एज अ पर्सन। तो मेरे लिए स्टेप वन वॉज स्टिल ईजियर। स्टेप टू वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी, which was intentionally saying positive things to myself. जैसे like I mentioned in the beginning of the video that I've never really felt good about myself, you know, how I look, how I am as a person, what I'm doing in life, all of that. तो जब भी ये थॉट्स मुझे आते थे, मैं इनको रिप्लेस कर देती थी विद समथिंग एल्स, विद समथिंग बेटर, विद समथिंग पॉजिटिव, कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जब जब भी मुझे लगता था कि मैं सेल्फ कंपैरिजन में जा रही हूँ, मैं हमेशा अपने आप को यही बोलती थी दैट आई एम सो प्राउड ऑफ वेयर आई एम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हु आई एम एज अ पर्सन एंड आई डोंट फील द नीड to compare myself to anyone. The thing is that जब आपने नेगेटिविटी रोज सुनी होती है, उसके बाद आपके नेगेटिव परसेप्शंस और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बनते हैं, which means that you have to give yourself positivity on a daily basis. You cannot be, जैसे for example eating healthy or workout, you have to stay very consistent with these two things if you want to see results, right? In your aesthetics, in your health, physical health. ऐसे ही if you want to think more positive, या if you want to improve your mental health, you have to be very consistent about it. Can't be like कि मैंने कल कर लिए थे आज नहीं करे, या 2 दिन से affirmations practice नहीं करे, नहीं। You have to be very consistent with this practice. And the most important thing is to show up on your bad days, on days when you feel absolutely shit about yourself, about your life, about your work, about where you are, what you are doing, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं। But you have to show up for yourself. You have to show up for yourself. You have to stay consistent. Consistency beats anything and everything. Whether you do something consciously or you do something unconsciously, अगर आप उसको consistently कर रहे हो, that will become a habit. And the end goal, I feel, of everything is to create a habit. जैसे नेगेटिव थिंकिंग इज अ हैबिट जो रोज प्रैक्टिस करने से आपकी इस लेवल पे पहुंची है, ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग इज अ हैबिट. You have to be very consistent with your practice of positive thinking, with your affirmations to get to this point. Another thing that really helped me was gratitude. क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा नेगेटिव रहा अबाउट लाइफ, जब कुछ पॉजिटिव भी होता था ना, मुझे उसमें भी पॉजिटिव नहीं दिखता था. व्हेन आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, मेरे को रियलाइज हुआ कि वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर इवन द स्मॉलेस्ट थिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है. अ वार्म प्लेट ऑफ फूड, अ बेड,
माय ओन स्पेस, मेरा अपना कमरा है। मतलब कितने सारे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है यार इस लाइफ में फॉर दीज सिंपल थिंग्स जो हमारे पास ऐसे ही हैं। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, आपको रियलाइज होता है यार देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दिस लाइफ, लाइक आई एम ब्लेस्ड, कितना कुछ है मेरे पास इस लाइफ में टू बी थैंकफुल फॉर, यू नो। So with that, we come to an end of today's video. I hope that you found this video helpful. If you're not feeling too great today, I'm so sorry. I wish I could give you a hug. But since that is not possible, if you are struggling mentally, trust me, it gets better. It does. But you will have to take some action. Don't overwhelm yourself with trying to change your entire life in a week. It will not happen. But what you can start doing is taking baby steps. एक टर्टल की स्पीड से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट विद वन थिंग एंड शो अप फॉर दैट एंड बी काइंड टू योर सेल्फ. Just because people weren't kind to you doesn't mean that you don't have to be kind to yourself. Until next time, take really, really good care of yourself. I'm sending you so much love, light, and strength. I'll see you in my next video. Bye. I cut some lemons. This is not lemon.